Okay, welcome you all. So this is the orientation come approach session for the ethics for the course the ethics the UPSC way. Okay, so curiosity batch two students will be entertained in the same batch as well as customized batch students as well. So see, we are entering into the December. We have to at least complete two to three papers out of GS and at least one or two papers of the options. So if you are not doing bare minimum of 4.55, then you are certainly out of the race when we are talking about the mains per se. Okay, so in this situation, what we have to understand for the time being, somehow we are in the process where we have to complete ethics for sure. Reason for the same, if you do not put the required focus on the ethics, then certainly you will be having issues in the essay, as well as when it comes to the approach of ethics, it's certainly going to backfire in your mains examination. So I have met n number of students appearing for this year mains, and again they say that the ethics was the something that I could have done better because GS 123 will be averaged out. It's not like that someone is scoring 110 in GS 2, so you might be scoring 110 in GS 3. But ethics is a differentiator. So that was the only concern of mine when I started this ethics wala thing. And those who are not able to do the same in the starting, that's what I feel that we could have done the same at least in the end of the session. This is what I expect you guys to do. Fair enough. So I will be just sharing the screen. The session won't last more than I will say uh, at max. I will say somewhere 1 hour or something. So let's do it. Finish our job as soon as possible. Can someone please just confirm if my screen is visible to all of you? Yes, sir. Fair enough. So what we will be doing six guided answer writing session. What we are going to do in the next 3 4 days, we will certainly entertain the same right now. Okay. So 2 3 questions we will practice today for sure. Then we will have two live case study sessions. Okay. 2 to 3 sessions will be conducting on the themes or value enrichment side, where we will be sharing certain notes with you as well. Okay. At the same time, how to approach the ethics. So it will be more of kind revision classes. Two most likely will be taken by myself. One will be the with the Ashish sir will be taking the same. Okay, so before we start ethics, there are certain directives. There are certain directives that I ask everyone to follow. Okay, what are those directives? First thing first, leave everything aside. Go back to your syllabus. Okay, when I say go back to your syllabus, first thing that you have to observe in your syllabus is all the keywords that have been mentioned in the syllabus. The problem is that market is flooded with the notes, market is flooded with everything. But the unique thing about these keywords are how can you make it yourself relatable. Next 15 20 minutes I say it to everyone, even if you're writing with me very first time, even if you have got the interview call, even if you're selected, if you have not done this basics, so my course will not be able to help you, because unlike market I do not focus much on how to put your content in any template. I focus on how to think, how to defeat the question per se, how to understand the demand of question per se. Okay, so what we will be doing, we will be just going for the syllabus wala thing first. Then keywords of the syllabus, then make it relatable. How we have to make it relatable? These keywords need to be defined. So first thing, define the keywords. I will say go Google it, and whatever shortest or relatable define that you can do, just write down in your copy. Then on same keywords you have to note down two examples. When I talk about the examples, there should be two kind of examples. First, the example which should be somehow regular, or I say big example. Now, what is regular or big example? Just look at the fact that if I talk about Ashok Khemka,
anyone can write in the integrity. If I talk about Mahatma Gandhi, anyone can write about the integrity. But another is day-to-day affair example, or say small example, I call it. So integrity, if you write in one-liner explanatory, for example, a teacher coming early in the class, it's a habit. Boss entering early into the office. Staff is coming after 10, boss is at 9:55. Mark my words, staff will start coming at 9:55 as well. Okay, so these things, for example, a policeman is bound to do the law and order duty, but he is not forced to ensure that elders cross the road safely. He is not forced to do good deeds. So, if you can relate the examples or keyword with the good deeds of common people, you make your examples relatable. Okay, so this is how you have to focus upon for the time being. Then moving further in the similar line, so what we can do, this is the basics that we have to do start. Okay, then what I have generally observed when I talk to students, sir, ethics is repetitive. What is repetitive? They say, sir, same question is asked in different form. So I feel content will remain same. So this is what the context that I'm setting up for the ethics is being repetitive. And n number of teachers, n number of mentors end up saying जी इसको यहाँ पे fit कर दीजिए काम चल जाएगा. It's perfectly fine, fit तो कर देंगे. But what to fit? This is what you have to find. So to break the monotonous nature or repetitiveness of your content, you have to prepare list of sister words. As simple as that. When I say you have to prepare the list of sister words which can be used interchangeably. For example, if I talk about honesty, then truthfulness should be there. If I talk about integrity, then it too belongs in the same clan only. Can we do anything else? For example, those who are online, joining from the Zoom itself, just give me any word. Just give me any word. Let it be impromptu for me as well. Okay, just give me any word. You can type in the chat box any word, any word. I'll just show you how to generate sister words. Any ethical term. Probity is nothing, yeah, it's a quite easy one. Probity is nothing but highest degree of truthfulness. So this is what it is. Then I will write it openness. I can relate it with the transparency as well. If the question is talking about organization and all. Okay. So say if you are saying me values. Okay. Values. Now I can talk about it. See, values are intangible. So I can create intangible derives that drives the a human being. So I can talk about values. Values are emotions. So if the question demands, I can talk about the emotions. Values cannot be efficient rather than they are effective. So I will find if I can put somewhere effective word and get the values. So compassion, if you give me empathy is already there. If compassion is there means understanding someone. So we have to create. Okay, when understanding someone is there, if nothing, right? Meaning of the same, filling in the shoes. Okay, making it relatable. These things we have to focus upon. So first we have to identify the right sister words to make the paper look like the things are not like that it has been presented. Okay, third thing,
Now, let's say this is the very basics. Now, before I enter into the different question answer wala side, okay, before I enter into different question answer wala side, let me teach you something. Per say we have either theoretical questions or case study. In theoretical questions, my mandate is simple that how ethics should look like ethics, it should be GS for keywords. Now people will say, Mr. You are saying too much of keywords, too much of keyword. Every book has the same content. How will I differentiate my content? This is the simple question that I have been asked n number of times. So I will just say one thing to you guys. Okay, let's understand about the same. Open the newspaper. Say this is 27th of November that I'm opening up. I'm just going for the content CWG1. I haven't read this news for the time being. Okay, so let's see how actually newspaper helps us to generate right keywords for the ethics. So just look at it. With the Commonwealth Sports General Assembly in the Glasgow, ठीक है, fair India is the likely to push for inclusion. So inclusion is an ethical word. So if someone asks me where I have to show compassion, so am I able to put inclusive development? Am I able to put inclusion within the society, inclusive society? Then certainly it is. So when you are reading newspaper, when you are reading your current affairs magazines, it actually should show where the ethical words are there. Okay, now yes, they were well prepared to deliver a controversy-free games, unlike 2010. Delighted that India has won bid to host this. Congratulations to the people of India. It's a collective commitment. I got another ethical keyword. So if you just ask me, sir, whether I have to make notes of all of this, no. You have to first identify. Your brain will be trained to use these words on the daily basis. But the problem with you guys is that you don't want to train your brain. You just need to be a data collector. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं बनना है, डेटा कलेक्टर बनना है अपने को. क्यों बनना है? Then moving further, spirit of sportsmanship. If it is about election, if it any about the competition, the case or question, can we write spirit of sportsmanship? Sportsmanship is already a ethical value in itself. So I haven't read even 10 lines. I got 3 keywords. पूरा पेपर पढ़ूंगा तो क्या ही होगा? As simple. ये तो easy हो जाता है. The problem is that people are not ready to devote the right kind of time to get this strategy. You guys are ready to put your focus on the content. Okay, कहाँ से क्या मिल जाए? अरे इसका नया नोट्स आ गया. अरे इस टॉपिक का पढ़ लेते हैं. भाई लिखो सेम कंटेंट, आएगा वही 105 नंबर. I've seen good teachers this year claiming 120 as the new normal. अरे मेरे स्टूडेंट का 120 आएगा. I have students who got 130, 128, but not in the list. Some people are in the list, that is a different game. But if you ask me, did I teach them in particular classes? I must have told them maybe 10, 20 words. But I taught them how to think. So if you are with me, I always say, be prepared to hustle on your own. If you think that I will come up with a spoon and spoon feed you, you are at wrong place. If you are here just to hustle, you want to ensure कि नहीं भाई इस बार फोड़ना है, so that is there. I will equip you with the right knowledge at the right time. But how to execute, I will tell you. But when it comes to execution, you have to execute. If I have to execute, then the government has to give one more attempt. And believe me, I'm going to justify that as well. हो ना हो, I do not care. But 100% जाएगा. चलो. India would prefer that the event held in October. Ashwini Kumar, Principal Secretary, adding that the executive will work out closely with the Commonwealth Sports. As the host, India can propose up to 2 new traditional sports. An official from the Indian delegation said one of the sports identified is yoga. Another thing, you got something new to add upon. Fair enough. So I just read more, not more than one para. So if actually you are reading the newspaper, you have to do nothing. You just keep scribbling. किसको यहाँ इस पार्ट से रिलेट कर सकते हैं, सिलेबस के इस पार्ट से रिलेट कर सकते हैं.
And whenever you start answer writing, I will say, whenever you start answer writing, first complete the exercise directives wala when I said. The notes that you are preparing over here, na, this will be actually utilized by you on the regular basis. This is what I will be suggesting. Fair enough. This is what you have to understand when it comes to the entertaining ethics. Stick to the basics, do the right things. Okay. Now, moving further. Okay. So, theoretical questions. First question that you will find in the theory is directly some value, but you will find UPSC is not asking a single value. It will integrate it with some other concept. For example, integrity and organizational culture, work culture has been integrated. So now your content is either integrity oriented or work culture oriented. When you write, you have to fix this gap. If you fix this gap, you will get the marks, say 120 plus. If you do not fix the gap, you will end up writing mains and scoring somewhere 80, 100. First thing first. Second, we will talk about quotation. The most dreadful area, I think, people are fearful of. So when you are entertaining quotation based questions, they are nothing but a small essay. Can someone tell me over here, what do you understand when I say small essay to the quotation based questions? What is it? Hmm. Anyone? No idea. To interpret, no. Interpretation is already there over there. Arguments for and against. I did not ask you to go for the debate or something like that. Essay is something having multi-dimensional. Essays are not unidirectional. First, you will interpret it. So always remember, if you are saying something, you always in the last, just before the conclusion, talk about the flip side. What is flip side? Whatever has been asked in the theoretical question, oh sorry, quotation question, just say opposite. Honesty is best policy. Sometimes honesty is not best policy. किशन जी, महाभारता युद्ध, वी कैन टॉक अबाउट इट. फेयर एनफ कि नहीं, वहां पे ऑनेस्टी की जरूरत नहीं थी अपने को. एज सिंपल एज दैट. Fair enough. So these two type of questions you will feel. Any other type of question in the theoretical side that you think that it is also there? There is another Hawa word I will say. In ethics, when I meet teachers, when I meet students, sir, applied ethics. Applied ethics question. Are what to do with the applied ethics question, yeah? As simple as that. If someone says me that it is a applied ethics question, if ethics is not applied, then what actually it is? You never call it when the Gene JS paper question comes on the Supreme Court. You call it applied polity. Inflation question impact on the daily life. You will never call it applied economics. But applied ethics has been used by teachers as well as students like that. It has been kind of an bomb or say ethical bomb for you guys. Market will create FOMO and you will end up consuming that FOMO. Oh, ethical bomb it is. Applied ethics. ये मैंने अपनी क्लास में अप्लाइड एथिक्स पढ़ा है. So what is the difference between applied ethics and ethics? In reality, nothing. It's just the application of ethics, na? Just a new term, and you are just done away with. Leave it aside. Okay, now before we start practice, some general things about the case study as well. Here too, different type of case study require different type of attitude, approaches. Why?
See, with all credibility, all I can say, have scored good, students have scored good, have worked on the ground, solving case studies on the ground during my 10 year as a consultant in the district Muzaffarnagar of the government of India. Okay, so on ground experience. So unlike other teachers, I will not be talking only about these theoretical things. Okay, in the last, I have some credibility. I belong to IIM Lucknow. So we have been taught case studies because in the MBA schools or the B schools, you never are taught through these books and all. You are taught through the case studies only. And through these case studies, you learn the next thing. In every class or something, I have never been told that it should be applied or something, or this approach should be required. Case study simply means to me there is a problem statement and this problem statement needs to be solved. And when you are solving this problem statement, it should have two, three, I will say, features, or it should conform to two, three principles. First one, it should follow the rationality. Okay, so legal backing should be there. Whatever step you are taking in the solving the case study, it should have rationality. Legal backing is there. Logical, it should not be illogical. Just like calling applied ethics e-bomb. Okay, rationality. Second, once the rationality is there, okay, once the rationality is there, check whether you are ideal, practical. So case studies which goes for these, I have observed these students are not getting marks these days. They used to get till 2017, 18, but 2019 to 2020, I can say up to 4. People who are writing practical things, people who are writing right things, they are getting more marks, unlike others. Getting it? Are you able to get it or not? Fair enough. So, practical things. Now, how to bring the practicality? Talk about doable things. They talk about Madhyam Marga, Aristotle's golden mean. So, balancing the idealism has been rewarded by the UPSC itself. Third point, case should be solved. None of the parts should remain unsolved. There can be a case that it requires multiple stages, but it's perfectly fine. All you need to work upon is solution only. Fair enough? Sorted. This is how you will be dealing with the case study per se. Now, one thing, similar approach is in the quotation. Okay, multiple dimension. मल्टीपल डायमेंशन कहां से आएगी? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल. PASL approach you can put it up. GS approach you can put it up. And number of approaches are there to think, not to write the answer. But here, what approach you should think upon? If you start thinking from a different perspective, you will not find the relevant content from the case. So while solving the case study, what area I have found that you should identify the stakeholders. Suppose it has not been asked. Don't write in paper. I'm not saying that you have to write in paper. I'm not saying at all. But do identify. Then identify their role, their value. Now see what value should solve the case. Accordingly, use these stakeholders. This is what you have to do for case studies. This was the general understanding of the ethics that I had to give. Now, moving further in the similar line, let's talk about approaches
What should be introduction? Suppose it's a theoretical question in the case study. Theoretical questions are being generally rewarded if you are writing contextual introduction. Just check what is the context. When we will practice one or two questions, we will do it. Okay. We will practice one or two questions today. Don't worry. 30 minutes we will practice, then I will leave it on you guys. From tomorrow onwards, we will be doing guided answer writing sessions. Whatever we will do in the last 30 minutes, we will do that on regular basis. Okay, this is what I have planned for this course. तो contextual introductions की अपन लोगों ने बात की. Then it also talks about, okay, theoretical question. Can we relate it with some recent current affairs when that is being rewarded? I've analyzed this current affairs wala thing in the very recent times. Very, very recent times. Then moving further, just give me a moment. UPSC, as I said, is not asking one concept. Rather than it is asking two concepts by interlinking them. So in the introduction itself, can you establish any relations with given concepts? Can you establish any relation with the given concepts? If yes, then certainly you are going to be rewarded. If yes, then you are certainly going to be rewarded for the same. As simple as that. Done? Sorted? Now, in the case study, when you talk about the introduction, generally either given in the question or you can summarize the case studies or you can put focus on the value of case study. For example, corruption case study is there. To talk about corruption in the introduction itself. For example, you can quote Chanakya or Kautilya that how fish, when the fish drinks water in the ocean, no one can get to know about it. You can talk something like this, value of case study per se. Okay, then whatever you are doing, make sure you should have the right ethical words. When it comes to the body of the case ethics questions, okay, body of the ethics questions. So body means I will just give you one guru mantra or one mool mantra or only one directives. Your subheading is your body. So more it will be crisp, more it will be directive towards the demand, more the chances of your getting content of the question right. Okay, we will practice it. Don't worry, we will practice it. Okay, subheading. Now, the most important thing about the subheading is to ensure whatever words you are writing, it should belong to questions only. So your whatever keywords are there in the question, the same keyword should be used to create the subheadings of that question, so that you do not digress from the demand.
It's nothing about writing wrong or right. It's about using the right words. The problem I have seen, people do not look at the subheading and they start writing and they end up. Now, after this session, I will certainly share some copies of my curiosity batch. I will share their first answer and the last answer. We have promised 32 sessions in the guided answer writing sessions for the 4 papers. We have completed almost 29, 30th maybe in this week only. Okay, so this is what we promised. That's it. It was our vision to complete 4 papers. Okay, complete 4 papers before December. And we did it. Before that, we are not turning them into the prelims mode. Because my purpose is simple. I'm not here to create FOMO. I'm not here to do away that responsibility that I have just for the sake of anything. Okay, so yes, prelims times is January only. That too late January. One more thing before I move to the conclusion wala side. This year, it has been supposed that by 28th of February, your interviews will be over. So 3rd or 4th March, results out. And once the results are out, some people will get IAS, some maximum people will not. And they all will reappear. They have ample amount of time. 15th of March, 2-4 दिन का रोना धोना भी होगा भाई. डिजायर्ड रैंक नहीं मिला है, या मतलब कुछ भी हुआ हो, क्या पता इंटरव्यू आउट हो जाएंगे कुछ लोग. In any case, 15 days in the March, April, May, 2.5 months. If you are well read, 2.5 months is more than enough. If you are not well read, 4 months are more than enough. January, February, March, April, May, 5 months, more than enough. But if you are not prepared enough, then even the next 1 year cannot do anything with you. As simple as that. Okay, so be in that mode. Why to ignore the subjects like ethics, essay, optional? I have only taken almost, I will say, I started my curiosity batch in the August. Okay, August, September, October. September, October, November, sorry. Yeah, 3 months are been done with the 4 paper. Still, we have December, January. Cannot we complete at least 2 or 3 paper? If cannot, then certainly you are in wrong hands or your approach is not right. This is what I will be saying. Then suddenly bombardments of prelims videos and all. It's just because so that you can digress. As simple as that. Chalo, moving further. Okay, so this should be your ideal thing for the body. Now, what to talk about conclusion per se? When I'm talking about conclusion, in ethics question, either application of the keyword that has been addressed in the question. For example, it says that it is about integrity or something. So can you come up something beyond integrity in conclusion? Yeah, how to inculcate integrity? So application of integrity. If when the society becomes integrated, then what kind of society it will be? Can you do that? If yes, then certainly the things are in your favor only. Okay. Then application is there. You can link it with current, and third, you can link it with some other subjects as well. Maybe schemes. Some people link it with the constitution, specifically preamble. If it is talking about honesty and all, this is the preamble that talks about, or say fraternity and all. You can talk about the preamble then. Secularism, talk about the preamble then. Sometimes you can quote the Supreme Court judgments as well. So it is there. Okay, so these are the most important parts of the any answer. But as I said earlier as well, there is one more side which we call it flip side. There is one more side which is flip side. Flip side is whatever has been given in the question, reverse it and address just before conclusion. This is how the things. Now, another thing when you're talking about this conclusion and all, okay, number of pointers.
Okay, number of pointers. So we have either 10 marker or 20 marker case study. So in 10 marker, 10 to 12 points should be there. Generally, we get two subpart, one flip side, then conclusion, before that intro. So the subpart which has been directly visible, give it 70% weightage. Then invisible one 30%. It can be a case that you have to address the invisible first, then 70%. Or it can be a case above one that you have to address the first 70%. Then that can be a case. Then flip side, 2-3 liner paragraph. Conclusion, 3-4 lines. If way forward, not more than 3 lines in self-explanatory manner. What I call self-explanatory manner, any line which can be self-explained within I will say 2-3 lines, 4 lines. Sorry, within a single line, I will say. So 3 points, 3 lines at max. Then introduction, again 2-3 lines. So this way you will end up writing 5 points, 4 points, say 10 to 12 points for 10 marker. Case study, it depends number of subparts this have. It can be a case that only two subparts, one will get 15 marker, another is 5 marker. This we will identify while practicing the question. Okay, this we will identify while practicing the question. This is what we have to understand per se. Done. Sorted. Shall we move further? Any questions till now? Any questions? Any doubt? Anyone? Else I will be moving to the question wala side. We will solve the questions for the time being. If no questions, just type no in the chat boxes, please. If no questions, just type no in the chat boxes. Either YT or Zoom, those who are attending from the Zoom. YT people, are you getting it? Okay, then let's move forward. I have taken some PYQs. Okay, I'll just try to dig out you guys. Okay, then promise me that you will try to write these as well. Don't consider it as a orientation session. Try to give it a try. Okay. First thing first. Question says the concept of just and unjust is contextual. कि आप सही हो या गलत हो उसके कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है, उसके बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है. दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो. It says what was just a year back, what was just a year back may turn out to be unjust in today's context. ठीक है, तो जो एक साल पहले सही था वो आज अनजस्ट दिखेगा. फॉर एग्जाम्पल, रैंडम एग्जाम्पल देता हूं मैं. तालिबान रूल, girls were studying, they were not wearing hijab during the democratic Afghanistani regime. Then suddenly Taliban comes. We all know the harsh reality. We all know the harsh reality of the same. As simple as that. Changing context should be constantly under scrutiny to prevent miscarriage of justice. So we have to check the constants. Examine the above statement with suitable examples.
नाउ द कमांड इज, अच्छा मैं जब मैं गाइडेड आंसर सेशन होऊंगा तो साथ के साथ आप लोगों को कमांड भी क्लियर करवाता चलूंगा, इस कमांड का क्या मतलब होता है अकॉर्डिंगली। ठीक है। और यह एक मेरी रिकॉर्डेड क्लास भी है शायद कमांड्स की, वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, आपकी पोर्टल पे मिल जाएगा। ठीक है, नो नीड टू बी वरीड अपॉन इट। नाउ इट सेज कि सर माय कीवर्ड इज एग्जामिन, तो माय फर्स्ट इंस्टांस इज लाइक फर्स्ट रिएक्शन इज ओके, तो एग्जामिन है तो डॉक्टर भी तो एग्जामिन करता है। डॉक्टर एग्जामिन किस पे करता है? वो किसी बेसिस पे करता है, वो कुछ रिपोर्ट्स बनाता है, उसके बेसिस पे एग्जामिन करता है, कुछ सिम्टम्स पे बनाता है। तो वी शुड नो एज वेल। ठीक है। एग्जामिन द अबव स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, तो हमें सुटेबल एग्जाम्पल्स को एज अ रिपोर्ट की तरह ट्रीट करना है अपने डॉक्टर होने पे। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है। तो फर्स्ट इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ, फर्स्ट इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ वी कैन टॉक अबाउट कि भाई क्वेश्चन में पूछ रहा है मैं जस्ट, अनजस्ट एंड मेक इट कंटेक्चुअल। सो यहां पे मेरे को एक नाना पाटेकर की मूवी है अब तक 56, तो उसमें एक डायलॉग है उसका, योर परसेप्शन इज योर रियलिटी, माई परसेप्शन इज माइन। रावण भी एक हद तक सही था ना, अपनी बहन के लिए किया उसने जो किया, एज सिंपल एज दैट। ट्राई करना चाहेगा कोई? इंट्रो में कौन सा सिलेबस का पार्ट यूज कर सकते हैं हम? यस प्लीज, पीपल इन द जूम मीटिंग इटसेल्फ। बताओ बताओ। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एथिक्स, युगल आई वुड लाइक टू हैव हाउ, मतलब मेरे को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख के बताओ अब आप। नहीं नहीं, वो तो मैं समझ गया। मैं कह रहा हूँ इंट्रोडक्शन लिख के बताओ। फर्स्ट लाइन लिख दो, पूरी नहीं तो, क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जो आप बोल रहे हो दैट आई एग्री, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एथिक्स परफेक्टली फाइन। यस ट्राई इट आउट, देते हैं 1-2 सेकंड का टाइम आपको, यही तो करना है हमको कल से। मैं तो बता ही दूंगा, मैं तो पढ़ के आया हूँ। यस प्लीज ट्राई। अभी तो बताया इंट्रोडक्शन कंटेक्चुअल कर लो, इसमें तो है ही कंटेक्चुअल वर्ड यूज। कोई आप रीजनिंग दे सकते हो। वाईटी स्टूडेंट्स यू टू कैन ट्राई इफ यू विश। युगल मुझे एक एग्जांपल नहीं चाहिए, मुझे पूरा जैसे इंट्रोडक्शन लिखते हैं वो चाहिए, प्रॉपर इंट्रोडक्शन जैसे लिखते हैं। व्हाट अबाउट अदर्स, अदर पीपल आर आल्सो देयर, दृष्टांता मानस। ओके, लेट मी राइट देम। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, मैं इस इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत कर सकता हूं। ओके, एंड विद एवरी चेंज comes new realities,
अब मैं अगर चाहूं इसको G2 से भी रिलेट कर सकता हूं. फॉर एग्जाम्पल, इन इंटरनेशनल एना, द एक्सेप्टेंस ऑफ G2 बाय अमेरिका इज क्रिएटिंग स्पेस फॉर द बीजिंग इटसेल्फ. मैं डाल दिया, मैंने इंटरनेशनल रिलेशन के आंसर के साथ शुरू कर दिया. आज से कुछ साल पहले G2 नाम का कोई वर्ड ही नहीं था, G7 था. ठीक है, तो मतलब चाइना ने कुछ तो अपना क्लाउड ऊपर किया. गॉट इट? क्लियर हुआ ये इंट्रोडक्शन कैसे बनाया हमने? जल्दी से वाई और एन टाइप करके मुझे बता दो इफ इट इज क्लियर. सॉर्टेड? डन. ठीक है, तो यूनिक करो अपने इंट्रोडक्शंस. ये जो मार्केट में कहते हैं हम प्री बना के दे देंगे, तुम मेरा सिलेक्शन भी करवा के दे देना. जो तुम्हारा टॉपर आएगा उसकी सीट दे देना मुझको. नॉट वर्थ इट. ठीक है, बाकी गूगल को छोड़ के किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या? दृष्टांता, मानस. ठीक है, डन. ठीक है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट के साथ अपन लोग शुरू कर सकते हैं अपन लोग. देन इट्स ए जस्ट ए ईयर बैक. ठीक है, अनजस्ट इन टूडेज कंसेप्ट. तो मैं एक यहां पे टेबल बना देता हूं. ठीक है, फीचर जस्ट अनजस्ट अ ईयर बैक प्रेजेंट सिचुएशन. I can go with it. I can type n number of examples now. One, Taliban rule, women oppression. Okay. For example, 7 October 2023, when Israel started the war, n number of people were with Israel. The Israel is responding to the terrorist attack on its soil. But presently, the way Gaza has been affected, everyone is criticizing Israel. It can be another example. Okay, for example, a year before, country like Venezuela was considered a just rule. Now America is trying to manufacture the mandate over there. तो unjust हो गया वो present times में. You can go for the economic side. Investing in the illegal betting apps were just because it was not being regulated. Now unjust. Now with whenever I put any feature, I will write a word like social issues create कर रहा है, public harmony disturb कर रहा है, whatever be the case. Okay, whatever be the case that we can put forward. Sorted. Now once it is there, we have to show that the core principles never change in any context. So you have n number of examples: Mahatma Gandhi ji, Vivekananda ji, secularism of India. It will never change. In any case, it won't become unjust. So you can talk about these things. Sorted? आया? थोड़ा क्लैरिटी आया? Then in the conclusion, go for something like this. You're talking about ki should be constantly under scrutiny, adultery and all, the Supreme Court judgments where it has become activist kind of tone. You can quote all this. So basically, in these questions, we have to think a lot. Then sorted.
Chalo. So I won't be giving all the points. I want you guys to think more. I will just give the structure, how to think, so that you do not feel haphazard. One good thing about the answer writing, I will be suggesting, whenever you are in the right structure, you will always address the demand of the question. I will be expecting only one thing from you guys. Whenever you write any pointer, make sure the keyword, if possible, is the third word under the box or underlined. Yeah, it should be under the box. In the box, I will say, or should be underlined perfectly. Then you write like whole point. As simple as that. Okay, a small example. So this can be one way of writing answer. Second way can be you just write the keyword or explain the concept through the same. Okay, I call it example explainification. Explainification. Even this method is perfectly fine, perfectly good. No need to be worried over it. As simple as that. But don't do it. Explain for the 2 lines, then example explain for 4 lines. So 4 liner point means you will never reach 10 to 12 points. You will get stuck in 6 to 8. I will share certain copies of the Curiosity batch. You will find. See, always remember, even if you are unable to write in 7 minutes presently, is perfectly fine. First, your focus should be on the quality, then the quantity, because you have to write mains 26. So you will be having enough time to work on the quantity. But if you do not work on the quality right now, you won't be working. So what I want, if you have joined this batch, if you have access to this batch, make sure that each and every day counts. सो 15 दिन का हमने ये प्लान बनाया है तो मेक श्योर इन 15 days I can say that the people who have joined me, its GS4 is done and they have the base for essay practice essay. तो all I can say at least GS1 प्रिपेयर हो जाएगा प्रीलिम्स के साथ साथ, एक पेपर और कोई कर लो GS2 3 में से, तो 3 पेपर आउट ऑफ 4 विल बी बेयर मिनिमम फ्री. अभी भी टाइम है इन्हीं 2 महीनों में, बट डू इट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. APJ Abdul Kalam Sahab. Quotation based, a long quotation I took. So the question says, where there is a righteousness, जहां पे सच्चाई है, धर्म है, is in the heart. Okay. Beauty in the character. Heart means your core values. Mind can change, heart will never change. Heart is going to be heart on. ठीक है, हार्ट तो मतलब दिल तो बच्चा है जी वाला हिसाब है ना. ठीक है, देन हार्ट शुड बी हार्ट. ब्यूटी इन द कैरेक्टर. व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर यू हैव. कैरेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए. व्हेन देयर इज ब्यूटी इन कैरेक्टर देयर इज हार्मोनी इन द होम. हार्मोनी इन द होम मतलब इनसाइड. दिस होम मींस इनसाइड, ये आपका घर नहीं, अंदरूनी. ठीक है, पीस, सोलेस, ट्रैंक्विलिटी, दीज आर द कीवर्ड्स दैट यू विल बी यूजिंग. So when you are actually reading the question, वही क्वेश्चन समझ जाओगे डिफीट क्या करना है. इट विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइस. एज सिंपल एज दैट. When there is harmony in the home, there is order in the nation. Harmony means inside, internal security. Done. Then order in the nation means nation is doing good. Order, public law and order problem नहीं है, public order problem नहीं है. Simple. When there is a order in the nation, there is a peace in the world. If you just look at it, the question says, world में तब सब सही होगा when nations are doing good. Nations will do good when their home is in order. Say suppose states. And state कब होगा जब आपके घर में होगा. ठीक है, when there is harmony in the home. ठीक है, it says अब हार्मोनी होम में कब होगी, घर में, यानी इनसाइड कब हो रही है, when your character is in the harmony. And beauty in the character. ठीक है, when there is a beauty in the character. अब beauty in the character तब होगा when your heart is in righteousness or your heart follows the righteousness.
So it shows the concentric circles they are following. As simple as that, कि concentric circles है. तो in introduction itself, okay fine, before I move, what should be the introduction? Anyone? Introduction में क्या लिखना चाहिए हम लोगों को? Yes, please. Write it down chat box में. What kind of introduction we can do? कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन है, क्या इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं अपन? Explaining the quote will take hell lot of time. तो इंट्रोडक्शन छोटा होगा ही नहीं फिर. Yes, anyone else? What can we write in introduction itself? Change in inner cell lead to change in outer cell. ठीक है, कैन बी रिटर्न. चलो, बट समरी कुछ ज्यादा ही छोटी हो गई. व्हाट एल्स? ट्राई करो, ऐसे कोई फायदा नहीं है फिर. Whose quotation is this? Can we talk something about him? No, Distanta. This is average kind of things. We don't want to do average things in our class. Anyone can think of it. In these questions, you can also talk about directly APJ Abdul Kalam himself. Okay, so APJ Abdul Kalam, to above quote, have shown the way that how setting the home and order can lead to order or peace at the world order. Simple. Or how tranquility in the world starts with the purity in the heart. सिंपल, उन दोनों को लिंक कर दिया, पूरी जर्नी समराइज कर दी. तो इट कुड हैव बीन अ बेटर वे टू प्रोड्यूस द सेम. सॉर्टेड? समझ में आया इंट्रोडक्शन या नहीं? फटाफट भाई और टाइप कर दो अगर आ गया तो. वर यू एबल टू गेट इट? डन. थैंक यू. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन इज देयर. देन अब देखो, इस क्वेश्चन में अपने आप में मल्टीपल चीजें हैं. व्हेन देयर इज राइटियसनेस इन हार्ट, ब्यूटी इन द कैरेक्टर. ठीक है, इट सेज राइटियसनेस इन हार्ट, ब्यूटी इन कैरेक्टर. हाउ? तो कोर वैल्यूज, डेवलपिंग कैरेक्टर, यहां पे आपको इसकी बात करनी है तो मैं ऐसे लिख दूंगा, कोर वैल्यूज डेवलपिंग कैरेक्टर. फिर अब मैं वो सारी बातें कर लूंगा कि कोर वैल्यू जो अपनी होती है ना, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड ऑल, कैसे कैरेक्टर डेवलप, एक्सपीरियंसेस, ये सब लेकिन प्योर हार्ट की वजह से आएगा. ठीक है, तो पहला. सेकंड, ब्यूटी इन कैरेक्टर, देयर इज हार्मोनी एंड होम. तो हाउ कैरेक्टर लीड्स टू हार्मोनी इन होम, देन यू विल बी हैविंग द फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइस. कैरेक्टर है ना, अरे नहीं, ठीक है, दूसरों की हेल्प करने का मन करेगा, इमोटिविज्म रहेगा. यू विल बी ब्रिंगिंग दीज वैल्यूज इन दिस पार्ट.
नाउ अपनी कितनी सब हेडिंग बन रही है? 3। हर में कितने पॉइंट लिखने पड़ेंगे हर सब हेडिंग में? यस, एनीवन? इफ वी आर गेटिंग 3 सब वर्डिंग, सी, एक हमने बनाया कैरेक्टर, फिर होम, फिर हमने किया वर्ड ऑर्डर को पीस में, तो 3 सब हेडिंग बन रही है। तो हाउ मेनी पॉइंट्स इन ईच? हाउ मेनी पॉइंट्स इन ईच? 3 4 3 4। ठीक है, 3 4 पॉइंट सीख जाएगा, मतलब बेयर मिनिमम 3 तो रखना ही है कहीं पे भी अपने को। ठीक है, यस। नाउ इसका फ्लिप साइड क्या बनेगा? फ्लिप साइड क्या बनेगा? एग्जाम्पल्स तो निकाल लोगे तुम लोग या वो भी बताऊं मैं? फ्लिप साइड क्या बनेगा बताओ? फ्लिप साइड क्या बनेगा? उल्टा। अब देखो, फ्लिप साइड लिखने के भी दो तरीके होते हैं। आइदर यू कैन जस्ट बी नेगेटिव टुवर्ड्स द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है, और यू कैन से दैट वर्ड पीस goes beyond these factors. For example, yes, wrongfulness in chaos in the word, agreed. Individuals value alone are insufficient. Fair enough, good. कि हमें टीम चाहिए, एक अकेले से कुछ नहीं होगा, तो वी नीड कलेक्टिविज्म टू pursue this doctrine of APJ Abdul Kalam. So if only I believe, you guys do not believe, it won't work out. ठीक है, we have to go beyond it. This is where you have to take the path. You have to take the right understanding. Fair enough, डन। चलो, देन कंक्लूजन करते हुए यू कैन क्रिएट समथिंग लाइक दिस। कंक्लूजन करते हुए क्या कर सकते हैं अपन? अच्छा, मैं एक हिंट दे रहा हूं, आई वांट यू गाइस टू ट्राई कंक्लूजन, ठीक है, एवरीवन विल ट्राई ऑन द सेम लाइन ओनली। तो हिंट इज विश्व गुरु। हिंट इज विश्व गुरु, राइट द कंक्लूजन। फटाफट राइट कंक्लूजन लिखो। हिंट है विश्व गुरु, विश्व गुरु यू हैव टू यूज। राइट राइट राइट। टाइमर ऑन करना पड़ेगा क्या मुझे? Inculcating values in the heart and soul of the people as acting as a wish guru and teaching of Mahatma Gandhi to make the world peaceful। नहीं, मजा नहीं आया, फर्स्ट लाइन में बात नहीं हुई। विश्व गुरु इज द इंडिया ओनली ना, तो पीपल कैन नॉट बी विश्व गुरु। मजा नहीं आया इसमें, नो।
सेकंड पार्ट स्टिल बेटर, जो फोर्सफुल करवाया वो नहीं हुआ बस। यस, एनीवन एल्स? ट्राई करो यार, ऐसे मजा नहीं आएगा। India's leadership in the Global South Initiative during G20, rooted in values of dialogue and dignity, reflects how practicing ethical conduct at home strengthens the aspirations of to be a Vishwa Guru or like a Vishwa Guru. दोनों ठीक है, चलो, good one. So see, this one is a good one conclusion when it comes to conclusion, na? If I talk about it. So she has written India's leadership in Global South Initiative during G20, rooted values of dialogue and dignity, reflects how practicing ethical conduct at home strengthens aspirations to be a Vishguru. Fair enough. Okay, the following of personal virtues by individuals will help India to become a Vishguru. Yes, short and crisp. Even that one is fine. Even that one is fine. Chalo, good. वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन डिजास्टर डिप्लोमेसी, ठीक है, सॉर्टेड। चलो देन, मोरलेस आ गए सबके, ठीक है, एक एक ट्राई हो गया। टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ विश्वगुरु, इंडिया शैल फोकस ऑन बिल्डिंग वैल्यू जस्ट लाइक एपीजे अब्दुल कलाम विद द साइंटिफिक टेम्पर। चलो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। हम उनकी वैल्यूज का इस्तेमाल कर लेते तो ज्यादा बेटर था। ये मतलब क्वेश्चन से रिलेटेबल हो जाता, फिर अभी रिलेटेबल नहीं लग रहा है। कंक्लूड कर सकते हैं लेकिन ऐसे हम इसको, ठीक है, सॉर्टेड। चलो, गुड वन। लास्ट एजेंडा ऑफ द डे, अब वी विल बी सॉल्विंग अ केस स्टडी। तो इन दिस सेशन आई विल बी सॉल्विंग अ केस स्टडी फॉर यू गाइस। आपको बस ये फोकस करना है मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है। और एक बार अगर आपने ये समझ लिया कि मैं क्या कर रहा हूं, मतलब फिर मैं आपको बता रहा हूं, चीजें थोड़ी सी कंपेरेटिवली इजी हो जाएंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट इट आउट। वी विल सॉल्व द केस स्टडी। देखो, केस स्टडी में सॉल्व करने के लिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू ऑलवेज रिमेंबर, यू हैव टू रीड इट राइट। तो रीड इट राइट में ऑलवेज मार्क मे keywords, what if it things, and write down all the possible keywords in a same manner. ओके, मतलब बाद में सोचना नहीं है। अब मैं ये केस स्टडी आप लोगों के लिए सॉल्व करने जा रहा हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने हुए देखना है मुझे, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, सॉर्टेड। इट सेज सुनील इज यंग सिविल सर्वेंट, ठीक है, एंड हैज अ रेपुटेशन फॉर हिज कंपिटेंस इंटीग्रिटी। अब कीवर्ड्स देखो कैसे निकल के आ गए, कंपिटेंस, इंटीग्रिटी, डेडिकेशन, रिलेंटनेस। कैन आई से परस्यूट ऑफ डिफिकल्ट, रिलेंटनेस, परस्यूट ऑफ डिफिकल्ट एंड ऑनरस जॉब्स। अब मुझे ये बताओ, कैन आई से दैट दीज ऑल आर नथिंग बट सिस्टर वर्ड्स? कैन आई से दैट और नो? अभी हमने सिस्टर वर्ड्स की बात की थी स्टार्टिंग में सेशन की। Yes, so these are the sister words. Considering his profile, he was picked up by his bosses to end a very challenging task. अब वेरी चैलेंजिंग तो कौन से एथिक्स के वर्ड याद आते हैं? अच्छा, फॉर्टिट्यूड होता है, करेज ऑफ कन्विक्शन होता है, ठीक है, ऐसे केसेस में, ठीक है। तो हमें ये भी दिखाना है कि चैलेंजिंग टास्क है, तो वर्च्यू एथिक्स भी आ सकता है काम में अपने, ठीक है। तो कंपिटेंस के ऊपर भी उसकी बात आ रही है, ठीक है। तो मैंने ये चार पांच वर्ड्स, चाहे तो मैं साथ के साथ लिखता भी रहूंगा पेपर के ऊपर, बट मुझे याद है। एंड सेंसिटिव असाइनमेंट, अब जैसे सेंसिटिव असाइनमेंट बोला तो मेरे को सेंसिटिव होने के लिए कंपैशन, एम्पैथी, इंटीग्रिटी दिखानी पड़ेगी, वैल्यूज, ह्यूमेन वैल्यूज दिखानी पड़ेगी, ठीक है, उनको समझना पड़ेगा, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो परसुएड करना पड़ेगा। ओके, तो मतलब अच्छे खासे कीवर्ड्स मेरे को निकल के आ रहे हैं यहीं पे, ठीक है। ही वॉज पोस्टेड इन ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट जो है ट्राइबल, तो ट्राइबल्स के लिए मुझे सेंसिटिव होने को बोला है भाई उन्होंने। अब ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट में हमने क्या किया,
अच्छा, तो उनका डिस्टिंक्ट कल्चर होगा, डिस्टिंक्ट वैल्यूज होगी, तो हमको उनको ठेस नहीं पहुंचाने उनकी भावनाओं को। ठीक है, वेरी गुड, नाउ द थिंग्स आर क्लियर। ठीक है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से सेफगार्ड्स दे रखे हैं ट्राइबल्स को लेके, वो मैं सोच लेता हूँ। ठीक है, कोई आर्टिकल स्पेसिफिक याद आ रहा है तो उसको मैं कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक कर देता हूँ, क्योंकि मेरा जो भी स्टेप होगा वो मैं कॉन्स्टिट्यूशन से कर दूंगा। तो नेशनल जो ट्रिब्यूनल है शेड्यूल कास्ट की, या नेशनल कमीशन जो है, वो दोनों भी अपने पास है। मतलब ट्रिब्यूनल तो नहीं, चलो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, 338 आर्टिकल, तो उसका भी इस्तेमाल मैं कर लूंगा। ठीक है, ठीक है। नोटोरियस फॉर इलीगल सैंड माइनिंग। अब यार इलीगल सैंड माइनिंग कर रहे हैं मतलब उन ट्राइबल्स को पैसा मिल रहा है। ठीक है, अब दो चीजें हो सकती है, तो ट्राइबल्स खुद इन्वॉल्व है तो उनको एक्स्ट्रा जॉब चाहिए होगी, या ट्राइबल्स की लैंड में कोई और सैंड माइनिंग कर रहा है और जिससे ट्राइबल किल से पड़े हैं उनको गुस्सा आ रहा है। सिंपल सा लॉजिक है मेरा। तो इसका मतलब वहां पे लड़ाई वड़ाई भी हो सकती है। ठीक है, तो इलीगल चीज है तो मुझे एक्शन लेना होगा, तो हो सकता है पॉलिटिकल इशू आएगा, पॉलिटिकल इशू आएगा तो अनड्यू इन्फ्लुएंस, इंडल्जेंस, इस टाइप की चीजें, एलिगेशंस। ठीक है, हो सकता है कि खतरा जिसे बोलते हैं, डेंजर टू द लाइफ, वो सारी चीजें मुझे यहाँ पे कंट्रोल करनी पड़ेंगी। Fair enough. The excavating sand from river belt, okay, transporting through trucks and selling them in black market. Black market मतलब ऑब्वियसली ब्लैक मनी, ब्लैक मनी मीन्स इलीगल थिंग्स। और देखो, जब भी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे ये कोई इलीगल काम होता है तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, तो हो सकता है इसका पैसा आर्म्स रेस में यूज हो सकता है कहीं और यूज हो। तो व्हाट वी हैव टू थिंक ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। अब देखो, मैंने अभी ना आधा केस पढ़ा है, मैंने क्वेश्चन में नहीं रखे इसीलिए इसको, क्योंकि आज हम सिर्फ केस पढ़ना सीखेंगे, पढ़ते कैसे हैं। लेकिन अगर आपने देखा होगा, मैंने काफी सारे एथिकल वर्ड्स बोल दिए और पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में ना क्लियर चल रही है चीजें कि मेरे को करना क्या है। ठीक है, दिस इलीगल सैंड माइनिंग एंड माफिया was operating with the support of local functionaries। ठीक है, एंड ट्राइबल मसलमैन। तो ट्राइबल मसलमैन, अब मसलमैन का मतलब हो गया वो पावर मॉन्गर है, उसने पावर कंट्रोल कर रखा है। ठीक है, तो वो एक्सप्लॉइट भी कर रहा होगा विद इन द ट्राइबल्स को भी, ये भी एक सच्चाई है। तो उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते यार, ये भी सही चीज है। ठीक है, हु इन टर्न वर ड्राइविंग सिलेक्टेड पुअर ट्राइबल्स एंड हैड केप्ट ट्राइबल्स अंडर फियर एंड इंटिमिडेशन। अभी पढ़ा नहीं है मैंने, पुरानी केस स्टडी है काफी, तो लेकिन हो गया। सुनील बीइंग ए शार्प एंड एनर्जेटिक ऑफिसर। ठीक है, मतलब ठीक है, तेज आदमी है। ठीक है, शार्प एंड एनर्जेटिक ऑफिसर इमीडिएटली ग्रास्प द ग्राउंड रियलिटीज। तो ग्राउंड रियलिटी समझी, एंड मोडस ऑपरेंडी फॉलोड बाय द माफिया थ्रू देयर डिवियस मैकेनिज्म। ऑन मेकिंग इंक्वायरीज ही गैदर्ड द सम ऑफ देयर ओन ऑफिस एम्प्लॉइज। तो करप्शन भाई घर में है, तो सबसे पहले तो इनको ही देना पड़ेगा, वरना ये टिप फिप देके उसको भगाते रहेंगे। ठीक है, अरे हेड इन हैंड एंड ग्लव। अब नेक्सस के लिए मुझे एक सिस्टर वर्ड मिल गया। कल को अगर आपसे कोई पूछेगा पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस है, तो कहेंगे पॉलिटिकल क्रिमिनल हैंड इन ग्लव है। ठीक है, हैंड एंड ग्लव है, इन हैंड एंड ग्लव है, तो उससे हम बात कर सकते हैं। तो जब रोज हम ऐसी चीजें सोचेंगे ना, अच्छा इसका सिस्टर वर्ड हो सकता है, इसमें यहाँ ये यूज कर सकते हैं, चलो कुछ नहीं आ रहा जीपीटी से पूछ लेते हैं इसका सिस्टर वर्ड क्या होगा। जब एक बार आप प्रोसेस समझ जाओगे कि केस स्टडी सॉल्व कैसे करनी है ना, फिर आपको 50 तरह की अप्रोचेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉल्व करनी है अपने को कैसे, प्रॉब्लम कोई सी भी हो। वरना तो मैं भाई ऐसे लिखने के 500 अप्रोचेस, केस स्टडी लिखने के 1.5 लाख अप्रोचेस, तुम नोट्स बनाते बनाते थक जाओ। फिर 1 ईयर का प्लान 5 ईयर में कंप्लीट अपना कन्वर्ट करो, मेरी दुकान चलती रहेगी। बट दुकान मुझे भी चलानी है, मेरा पर्पज है कि भाई जितने लोगों को गाइड करो उसमें सक्सेस रेट ज्यादा हो सिलेक्शन का। एज सिंपल एज दैट। व्हेन यू आर इनटू द मेंटरशिप काइंड ऑफ कोर्सेज, आपको सक्सेस रेट दिखानी होती है। ठीक है, कई बार रिजल्ट नहीं आता बट स्टिल स्टूडेंट की इंप्रूवमेंट दिखती है, उसको पता है कि, मतलब मैं आप लोगों को सिर्फ एक सिंपल सी चीज बताऊंगा, क्यूरियोसिटी बैच में एक ने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, देन ही ड्रॉप्ड आउट, तो उसके फादर का फोन आया मेरे पास। कहते हैं कि मतलब एक चीज बहुत अच्छी हुई है सर आपके पास जाने से, इसने बोल दिया सर पापा मेरी औकात के बाहर है यूपीएससी का एग्जामिनेशन, अब मैं घर का बिजनेस संभाल लेता हूँ। और ये बात मैं इसको 3 साल से समझा रहा हूँ। तो आई डू नॉट नो हाउ टू रिएक्ट, क्योंकि एज ए यूपीएससी इंस्टीट्यूशन तो मेरे लिए वो फेलियर है कि भाई मेरे पास रह के भी बच्चा गया। बट एज ए मेंटोर आई गॉन कि भैया चलो ठीक है, उसको एहसास हो गया। तो सेम चीज, आपको किस चीज की जरूरत है, क्या करना है, पहले वो देख तो लो। आप 15-20 अप्रोचेस इकट्ठे करने में लगे रहते हो बस। ठीक है, सॉर्टेड नाउ। विद देम हैव डेवलप्ड क्लोज अनहोली नेक्सस,
Sunil initiated a stringent action against them and started conducting raids on their illegal operation movement of trucks filled with sand. The mafia got rattled as not many officers in the past had taken such strong steps against the mafia. Some of the office employees who were allegedly close to the mafia informed them. अब जैसे inform them आया connivance, trust deficit within the department. ट्रस्ट नहीं है डिपार्टमेंट में, टीम बिल्डिंग कहां से होगी? तो अब यहाँ पे सुनील को अपनी टीम बनानी पड़ेगी. यू नो दैट कभी कोई आईपीएस ऑफिसर एनकाउंटर करने आता है ना, उससे 6 महीने पहले वो गन वाले डिपोज में अपने बंदे बिठाता है कि भाई पता चला किसी दूसरे ने घटिया गन दे दी, हो गया आईपीएस का एनकाउंटर. तो हर जगह पहले सेटिंग करनी पड़ती है, अपने ट्रस्टवर्दी लोगों को करना पड़ता है. बड़े बड़े युद्ध ऐसे नहीं जीते जाते. That the officer is determined to clean up mafia's illegal sand mining operations in that district may cause them irreparable damage. अब जाके मैंने हुआ, ठीक है, कि भाई अब काम खत्म, ये मैंने केस स्टडी बदल ली. अब क्या कोर्स ऑफ एक्शन क्वेश्चंस वगैरह पे आज हम बात नहीं करेंगे, ठीक है. आज सेशन यही रोकेंगे फॉर द टाइम भी, ठीक है, क्योंकि केस स्टडी वाली क्लासेस में. तो देखो अब मेरा पर्पस क्या था आप लोगों से बात करने का, बेसिकली सी नाउ वी नो हाउ टू अप्रोच द आंसर, नाउ वी नो व्हाट टू डू. देखो कल अपनी फर्स्ट क्लास होगी, मैं आप लोगों से ना सिर्फ आज एक होमवर्क दे रहा हूँ स्पेसिफिकली, जिसने नहीं किया कुछ तो मतलब कस्टमाइज मेंटरशिप वाले प्रो का जब मैंने सेशन लिया था ये, तो मैंने उनको एक्सेस दिया था, मैंने उनको बोला था ये काम करने को, ठीक है. तो जिन लोगों ने ये काम नहीं किया, प्लीज कल अपनी पहली क्लास होगी 3 से 5 के बीच में. मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज क्लास से पहले जो मैंने सेशन के स्टार्टिंग में आपको लोगों को काम दिया है वो लोग आप काम कर लीजिए. दिस इज व्हाट ऑल आई विल बी सजेस्टिंग, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है. मतलब अपने को करना है यार ये, ठीक है. तो मैं यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम रोक रहा हूँ अब. दैट्स ऑल फॉर द यूट्यूब जनता. बाकी आप लोगों को आपको कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, आई विल गिव जस्ट थम्स अप.